So, the topic for today is posterior triangle of neck. If you look at the neck from the side, this is the mandible and lower down here is the clavicle. Neck appears like a quadrangle. Neck appears like a quadrangle when you look from the side. This is the anterior median neck line, and this is the anterior border of trapezius. Clavicle below, mandible above, anterior neck line, anterior border of trapezius. This is a quadrangle of the neck. This quadrangle is bisected by a muscle. If you must have seen a very prominent muscle on the neck here, running like this from here to here, sternocleidomastoid. So this sternocleidomastoid divides this quadrangle into two triangles, anterior triangle and posterior triangle. Anterior triangle we'll be studying later. Today we are concentrating on posterior triangle. Boundaries of the posterior triangle: anteriorly posterior border of sternocleidomastoid, posteriorly anterior border of trapezius, inferiorly clavicle. Okay? Clear? Now, the posterior triangle is further divided by one muscle which runs like this. Attachment of this muscle you have studied when you studied the scapula, and the name of that muscle is omohyoid. Omohyoid. It is coming from the scapula, goes here. It has two bellies. This is inferior belly and this is superior belly. This omohyoid divides the posterior triangle into two parts. The upper part is called as occipital triangle, and lower part is called as subclavian triangle. Occipital triangle and subclavian triangle. As the name suggests, subclavian triangle, as the name suggests, it will have subclavian artery, subclavian vein. Now, before we go ahead with the structures forming the roof and floor of this triangle, some basic things which you need to know, and one of that is in the deep fascia of the neck, which is also called as cervical fascia. Neck, cervix, uterus, neck of the uterus called cervix. Cervix, neck, cervical fascia in the neck. Cervical can be related to cervix of the uterus also, because cervix means neck. Cervical fascia, the deep fascia of the neck, is called as cervical fascia. So if I take a transverse section, of the neck, it looks something like this. आपण थोडेसे white chalks पाहिजेत आता नको. Next. Here is thyroid gland, and the fascia covering that thyroid gland is called as pretracheal fascia. Behind here are the vertebrae
Okay, vertebral body, and there are many vertebral muscles. The fascia which covers this vertebral muscles, these are prevertebral muscles and the vertebrae, there is a fascia running like this, and that is called as prevertebral fascia. So this is pretracheal fascia which covers the tracheal gland. We'll study it in details in thorax also. And this is prevertebral fascia, this is pretracheal fascia. The main thing I have not yet spoken about, and that is investing layer of deep cervical fascia, which is most superficial. It starts from here, goes like this, it splits to enclose the trapezius, it splits to enclose the sternocleidomastoid. Okay. It splits to enclose parotid gland. Okay. Splits multiple times to enclose two muscles, two glands, parotid, submandibular. Pre-investing layer of cervical fascia, prevertebral fascia, pretracheal fascia. Pretracheal fascia runs from hyoid to the thyroid gland. Hyoid to thyroid gland. Prevertebral fascia covers the prevertebral muscles which are in the front of the vertebra. This is the vertebra. Okay. Investing layer, its attachment starts from the external occipital protuberance, the nuchal lines, mastoid process, comes down here. In between mastoid and mandible, it splits to enclose the parotid gland, comes down here right up to here, then in midline goes up to the notch of the sternum, goes on the clavicle, goes on the scapula. This is how it is attached, like this, investing layer. Okay, like a cervical collar. You must have seen some people wearing this cervical collar for neck pain. Investing layer of deep cervical fascia is like this. It's in lower down, it is attached to the scapula, spine of the scapula, to the clavicle, to the manubrium. Okay, in midline here it is attached to the mandible, to the hyoid, to the suprasternal notch. Posteriorly it is attached to the external occipital protuberance, ligamentum nuchae, C7 spine, like this. So all these attachments, it runs basically like this, from here to here. Okay. Now let us see it in a sagittal section. If you see it in a sagittal section, this is sternum, this is manubrium, this is the thoracic spine, this is T4 level. The sternal angle is at T4 level. This is the diaphragm. This is the heart. What is the space between the two lungs called as? Mediastinum. This section is going through the mediastinum, not through the lungs. Mediastinum is further divided into superior mediastinum and inferior mediastinum by imaginary line passing through T4. Inferior mediastinum is further divided into anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum. एक दरवाजा अपटेल पकड़ anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum. This is pericardium and heart, from where the aorta will arise, go to the posterior mediastinum. Okay. Now I will show you the three fasciae, how they are. Prevertebral fascia is it gets attached to T4. So
So it is limited to superior mediastinum only. Pretracheal fascia. This is pretracheal fascia. This is prevertebral fascia. Pretracheal fascia gets attached to the tissue around aorta. Now, whenever there are infections in the neck, wherever there are infections in the neck, the pus tracks down like this. Pus in front of pretracheal fascia passes from superior mediastinum to anterior mediastinum. Clear? Superior mediastinum to anterior mediastinum. Pus between pretracheal fascia and prevertebral fascia pass from superior mediastinum to posterior mediastinum. Pus behind the prevertebral fascia is restricted to superior mediastinum only. Pus in front of pretracheal fascia passes from superior to anterior. Pus in between pretracheal and prevertebral pass from superior to posterior. Pus behind the posterior passes restricted to superior mediastinum because prevertebral fascia is attached to T4. This prevertebral fascia, which we are speaking about today, is the one which I had drawn in the previous diagram, covering the prevertebral muscles and vertebra on the anterior side. Anterior. This is prevertebral. So the nerves arising from it, they get a covering. They get a covering of prevertebral fascia. Okay? This prevertebral fascia extends and gives covering to the nerves, to the arteries. Okay? That is why tuberculosis of cervical spine may pass through that covering, brachial plexus, which is covering brachial plexus, and it may appear as a swelling in axilla. So patient may come to you कि यहाँ पे swelling है. Connection क्या है? So connection is, this is prevertebral fascia covering the vertebrae. The nerves are arising. These nerves are getting a covering. These nerves are getting a covering of the prevertebral fascia. These nerves are going towards upper limb via axilla. We studied the brachial plexus in axilla. And that's how the pus is getting released here and the swelling is here. Infection is in the neck. So through the axillary sheet, it comes out in the axilla. So that's why you need to know this is a very important fascia. What were the 3 layers we studied? 3 layers of cervical fascia. What were they? Investing layer, then pretracheal layer and prevertebral layer. Don't worry, you will be studying it again in the thorax. Reason I had to speak about this today because the roof of the posterior triangle is formed by skin, superficial fascia and investing layer of deep cervical fascia. What are the 3 things which form the roof? Skin, superficial fascia and investing layer of deep cervical fascia. Now whenever I said that you write anything about roof and you say superficial fascia, what is the another thing that should come? Superficial fascia containing external jugular vein, which we studied last time. In old people you see this vein, external jugular, a vein over here. Till now you have studied
lumbar plexus, sacral plexus, brachial plexus. Now the fourth plexus is cervical plexus. Okay, fourth plexus is cervical plexus and its branches: greater auricular nerve, lesser occipital nerve, transverse facial nerve, and 3 supraclavicular nerves. Greater auricular nerve, lesser occipital nerve, transverse facial nerve, and 3 supraclavicular nerves. 4 branches of cervical plexus. Supraclavicular nerve we have studied previously. It is the nerve which pierces the lateral end, the lateral supraclavicular nerve pierces the lateral end of the clavicle. Characteristics of clavicle: it is pierced by lateral supraclavicular nerve. So these supraclavicular nerves are 3: medial, intermediate, and lateral. We studied clavicle, peculiarities of clavicle: only long bone which lies horizontally, only long bone whose shaft is curved, a bone which is pierced by a nerve, lateral supraclavicular. आपका नाम क्या है? हाँ, साहिल, राहिल. क्या है डाउट आपका? हाँ चलेगा ना. You can say middle, intermediate, medial, intermediate. Okay, you can just check it. Because some books talk about lateral, some talk. You have read middle. Middle may be also possible because it pierces at this point. Okay. Transverse facial nerve. This is transverse facial nerve. Okay, some books do mention lateral supraclavicular nerve also, but we'll just confirm about this, whether the middle one pierces or lateral, because I have read lateral also. Okay, I need to draw this diagram multiple. So these are the structures in the roof. They are the contents also and structures in the roof also. Then external jugular vein. Okay, there will be some few arteries also, transverse facial artery. Now we are going to talk about the structures forming the floor of this triangle. This muscle also you have studied when you studied scapula. Levator scapulae. The nerve forming the floor, levator scapulae. Splenius capitis. Semispinalis capitis. Levator scapulae, splenius capitis. These are the muscle going to the skull, getting attached to the skull. So capitis. Semispinalis capitis. These are the muscles mainly forming the floor of the occipital triangle. Then comes the muscles here, and most important of them is
Scalenus anterior muscle. Scalenus anterior muscle. This scalenus anterior muscle is the one which divides the subclavian artery into three parts. By now we have seen pectoralis minor divides axillary artery. So now what we are talking about? Scalenus anterior dividing subclavian artery, and it separates the subclavian artery and vein. Vein is anterior, artery is posterior to the scalenus anterior muscle. There is scalenus medius, there is scalenus posterior also. Scalenus medius and scalenus posterior also. Okay. These muscles, hemispinalis, splenius, they will be covered by prevertebral fascia. ये बताने के लिए मेरे को वो सारा मंजन करना पड़ा आपको, नहीं तो मैं इधर सीधा बोल देता प्रीवर्टिब्रल फेशिया. कैसे समझेंगे आप? So what is, which fascia is there in the roof of the posterior triangle? Yes, investing. And which fascia covers the muscles forming the floor? Prevertebral fascia. Okay. So the floor is formed from inferior upwards by levator scapulae, splenius capitis, semispinalis capitis, covered by prevertebral fascia, and also by scalenus anterior with small contributions from scalenus medius and scalenus posterior. So boundaries are clear. Trapezius, sternocleidomastoid, clavicle. Roof is clear, floor is clear. Okay. Now we move on to the contents. Whenever contents are asked, anywhere, any triangle, any quadrangle, any space, any fossa, contents, so you have to think of four things: artery, veins, nerves, lymph nodes. Okay? So let's start with the nerves first. Let's start with the nerves first. In the occipital triangle, are the branches of cervical plexus. ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. Branches of cervical plexus. ये फर्स्ट लाइन आप याद रखोगे ना, आपको आधे कंटेंट्स याद रहेंगे. एंड इन सबक्लेवियन ट्रायंगल आर ट्रंक्स of brachial plexus.
अच्छा, तो दो प्लेक्सिस है, उसमें से एक ट्रायंगल में सर्वाइकल प्लेक्सिस, दूसरे में ब्रेकियल प्लेक्सिस, ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस. सो यहां पे देयर विल बी सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थ्री ट्रंक्स, अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक. सो अपर ये है, ये अपर ट्रंक है, ये मिडल ट्रंक है. अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक. सो अपर ट्रंक के साथ some branches arising from upper trunk, what are they? Suprascapular and nerve to subclavius. So suprascapular, nerve to subclavius. ये भी उसका कंटेंट रहेगा, ट्रंक है तो. There are two branches which arise from the trunk. There are two branches which arise from the roots directly. Nerve to serratus anterior, but nerve to rhomboids appear here. Dorsal scapular nerve, right? Nerve to rhomboid. Dorsal scapular nerve. क्लियर? यहां पे हमने लिखा ब्रांचेस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस. सो कौन से ब्रांचेस हैं? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, देन लेसर ऑसिपिटल नर्व, देन ट्रांसवर्स फेशियल नर्व, देन सुप्रा क्लाविकुलर नर्व. फिर नर्व टू रोम्बॉइड्स. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व जो इस ऑसिपिटल ट्रायंगल से पास होती है, एंड दैट इज नर्व गोइंग लाइक दिस फ्रॉम sternocleidomastoid, now going from sternocleidomastoid to trapezius. Which is the nerve which supplies both of them? Spinal accessory nerve. Spinal accessory nerve. तो ये ऐसे posterior border of sternocleidomastoid से नीचे जाती है. क्यों सिखा रहे हम आपको एनाटॉमी, और आप भी सोचते रहेंगे एनाटॉमी क्यों सीख रहे इतना डिटेल्स में? बिकॉज यहाँ पे जब एप्सिस, नेक एप्सिस करके कोई लेके आता है और आपने अगर एनाटॉमी पढ़ा नहीं है, आप उसको कट 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 काट दोगे, फॉरगेटिंग दैट अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द sternocleidomastoid इमर्जेस स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और उसको आपने कट किया. सो नर्व सप्लाई टू ट्रेपेजियस इज गॉन. आप बोलोगे क्या हो उसमें, क्या ये नहीं कर सकेगा पेशेंट? नहीं. अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस along with serratus anterior are responsible for overhead abduction. तो मालूम ही नहीं है तो फिर हाथ भी ऊपर कहां करेगा बच्चा? बट ऐसा नहीं है. overhead abduction is needed while wearing your shirt. बराबर है कि नहीं? शर्ट ही डालने को नहीं आएगा. कितना सोचो ना, कभी कभी एट योर एज यू मे नॉट हैव एक्सपीरियंस दैट पेन, बट समटाइम्स व्हेन द शोल्डर्स आर जैम्ड एंड ऑल, यू नो, पुटिंग योर हैंड इन दैट शर्ट, ब्लाउज, कुर्ता, एवरीथिंग इज पेनफुल. ओके, एक्सपीरियंस किया है कि नहीं आपने कभी? आड़ा टेढ़ा सो गए, बट somebody in your old person, your house must have said, you know, they have problem in taking the hand up. तो literally shirt पहनाना पड़ता है old people को, because those muscles have become weak.
Okay, so be very careful. One has to be very careful while treating abscess behind sternocleidomastoid. Spinal accessory. Now, important content of the posterior triangle. Apart from that, C3, C4, and then the nerve supplying the levator scapulae, all are there. ये क्लियर है? इसका क्लियर है. ब्रेकियल प्लेक्सिस, 2 nerves arising from the trunk and 1 nerve arising from the root. Other nerve arising from the root is here. Okay, then we come to the next thing, and that is the arteries or vessels. Okay, arteries. यहाँ पे सबक्लेवियन ट्राइंगल में रहेगी सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस नहीं, थोड़े ब्रांचेस. ऑसिपिटल ट्राइंगल में ऊपर एकदम ऐसे पीछे से देखोगे तो ऑसिपिटल आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी. ये सबक्लेवियन ट्राइंगल से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जाती है. सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, suprascapular artery, suprascapular foramen. Some things passes below the foramen, some passes above the foramen. याद है? That is the suprascapular artery. Okay, suprascapular. Then transverse facial artery is here. So occipital artery, transverse facial artery. So that transverse facial artery starts in this triangle and then passes here. Okay. Veins. सबक्लेवियन वेन. तो ये ट्राइंगल सबसे इजी है, आपको रियलाइज हो रहेगा. दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर सुप्राक्लाविकुलर फोसा. सबक्लेवियन ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर सुप्राक्लाविकुलर फोसा, सबक्लेवियन. So what is lesser supraclavicular fossa? I will teach you. मोमेंट भी से ग्रेटर सुप्राक्लाविकुलर फोसा मतलब एक लेसर भी होगा. वो लेसर क्या है मालूम है? ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है ना, उसके 2 हेड होते हैं, एक स्टर्नम को जाता है और एक क्लाविकल को जाता है. दोनों के बीच का ये छोटा स्पेस इज कॉल्ड एज लेसर सुप्राक्लाविकुलर फोसा. स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्टर्नो गोज टू द स्टर्नम, क्लाइडो गोज टू क्लाविकल. सो उसका ओरिजिन ऐसा है. वो दोनों के बीच में लेसर सुप्राक्लाविकुलर फोसा. सबक्लेवियन ट्राइंगल इज कॉल्ड एज ग्रेटर सुप्राक्लाविकुलर फोसा. सबक्लेवियन वेन, यहाँ पे ऑसिपिटल वेन आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन आएगा. लिम्फ नोड्स, सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स यहाँ पे आएगा. सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स, यहाँ पे ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स आएगा, बट यहाँ पे सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, especially the one on the left side. The lymphatics of the stomach reach here. Patient will come to you with a supraclavicular lymph node, and if you have missed my class, like whole जैन हॉस्टल की लड़कियां जो यहाँ पे बैठती है, कौन कौन हो, उनका नाम आ जाएगा इसमें, छोड़ दो. So then you will miss this important diagnosis of stomach cancer. Lymphatic drainage ही नहीं पढ़ा है बराबर से. Supraclavicular lymph node may be enlarged. It can be enlarged because
of the lymphatics coming from the breast also. Okay, so we cannot ignore any swelling like this. इसके लिए we should be knowing. हम लोग को नॉर्मली क्या लगता है, सर ये लास्ट में लिम्फेटिक सिखा रहे, चलता है कुछ तो लिखना है, प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ओके, सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स, occipital lymph nodes. So this is all about the posterior triangle, the contents. Okay. The subclavian triangle, 3 trunks of brachial plexus. The nerves arising from the upper trunk, that is the suprascapular nerve supplying supraspinatus and infraspinatus, nerve to subclavius, and nerve to serratus anterior. Okay, now we talk about one muscle, sternocleidomastoid. Its origin is from the sternum. Its origin is from the, of course, from the manubrium, which is part of the sternum, and clavicle. 2 heads, sternal head and clavicular head. Between that is lesser supraclavicular fossa. Origin is from sternum, upper surface, clavicle, upper surface, medial end. Muscle goes behind to the mastoid, for insertion. Mastoid, वहां से छोटा सा एपोन्यूरोसिस भी जाता है उसका. मेन इंसर्शन इज ऑन द mastoid. ओके, तो एक मसल जो ऐसे रन हो रहा है यहां से यहां, तो when it contracts, so there are 2 sternocleidomastoids. This is the muscle which protects our carotids. इसके लिए कैरोटिड को पाल्पेट करने के लिए वो मसल को थोड़ा सा ऐसा पीछे करके, सबसे बेस्ट पल्स इधर मिलता है, बट उधर कभी भी पल्स नहीं लेना है, बिकॉज आपको पल्स मिलता नहीं तो और दबाते और दबाते और दबाते. बट ब्लड सप्लाई, ब्रेन कैन टॉलरेट ओनली 10 seconds, 10 seconds, और आप 60 seconds इधर दबा के अगर उसका पल्स लोगे, आफ्टर दैट विल बिकम पल्सलेस. ओके, सो दैट इज वाई यहां पे कभी पल्स नहीं लेना है, ऑल्दो सबसे बेस्ट पल्स मिलता है यहां. इधर कैसा वो है कि नहीं, अपने ये फिंगर का हो रहा है या इधर का हो रहा है समझते नहीं, अपने ही पल्स मेजर कर रहे हैं क्या. ओके, सो देयर आर 2 sternocleidomastoid. तो देयरफॉर यहां पे कुछ लोग कट लेते हैं सुइसाइड करने के लिए. नहीं होगा, नहीं होगा. क्यों? स्टर्नोक्leidomastoid, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टर्नोक्leidomastoid पे कट होता है, थोड़ा ब्लीडिंग होता है, आदमी थोड़ी देर बाद वापस उठ जाता है. तो कहां पे एग्जैक्टली कट लेना है मैं बताऊं. क्यों? बिकॉज वो सुइसाइड नोट में आप लिखोगे टुवर्ड्स द एंड, एंड थैंक्स टू डॉक्टर युवराज. वो थैंक्स जो है ना, बच्चे लोग को समझता नहीं कब बोलने का थैंक्स. मैं जब ग्रांट मेडिकल कॉलेज में टीचर था, तो आई वॉज असिस्टेंट लेक्चरर ओवर देयर, जूनियर मोस्ट टीचर. तो वहां पे ठीक है, वहां पे बच्चों ने एक बार शोर मचाया था, शोर. इसके लिए एक टीचर ने गुस्से में आके बोले, तुम लोग के लिए आज एक पेपर लगे, पेपर सेट होगा, जो पास होगा वही प्रेजेंट, जो फेल होगा वो
एब्सेंट। ऐसा अगर हम रोज करेंगे तो तो फिर उन्होंने ग्रेज एनाटॉमी के फुटनोट्स में से, वो इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा ही उनको गुस्सा आ गया था, बच्चे शोर मचा रहे थे, तो ग्रेज एनाटॉमी के फुटनोट्स में से उन्होंने पेपर सेट करके लेके आए। पेपर जब वो डिक्टेट करते थे, तभी जेरोक्स मशीन नहीं था, कुछ नहीं था, तो डिक्टेट कर रहे थे तो लोगों को वर्ड्स भी नहीं समझ रहा था। बोले थे सर क्या है, सर क्या बोले, क्या बोले, मेरे को बोला लिखो, तो मेरे को भी स्पेलिंग नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसा ऐसा करके, एंड देन लाइक वीरू सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने एक ऐसा लुक दिया पूरा, वो मुन्ना भाई का हमारा जो क्लासरूम है ना ग्रैंड मेडिकल का, बिकेम वेरी हैप्पी, एंड देन ही वेंट फॉर टू द कैंटीन, और मुझे बोले भोसले मैनेज करो। हेलो सर, यस, 200 बच्चे और मैं, जैसे वो बाहर गए तो सर क्या है, क्या क्या है, क्या है। फिर मैं जाके भाग के पहले ग्रेज एनाटॉमी लेके आया, मुझे उसमें भी नहीं मिल रहा था इंडेक्स में, इतना बड़ा बुक। फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, पीछे से एक लड़का चिल्ला रहा है सर 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 सर। फिर एक दूसरा मेरा जूनियर था, उसको खड़ा किया था देखने के लिए वीरू सहस्त्रबुद्धे आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर वीरू आ रहे, वीरू आ रहे, वीरू आ रहे, तो समझा सब करके सारे बच्चे लिख रहे। रोल नंबर 1 उसने बोला इधर पेपर रखो, जाओ, मैं बाजू में बैठ खड़ा था, तो पहला रोल नंबर 1 आया, उसने पेपर रखा और मेरे को देखा और बोला सर थैंक यू, सर थैंक यू। क्या जरूरत है थैंक यू बोलने की। फिर वीरू ने मेरी तरफ देखा, थैंक यू क्यों बोला तेरे को? मैं बोला सर वो उसका पेन नहीं चल रहा था तो मैं उसको पेन। रोल नंबर 2 ट्रेंड सेट किया ना 1 ने, तो उसने पेपर रखा, सर थैंक यू। तो ऐसे थैंक यू अननेसेसरीली लोग बोलते हैं, तो इसके लिए मैं बताता ही नहीं कैसे कहाँ पे कट लिया एग्जैक्टली। तो सुइसाइड इज अ सक्सेस, मर्डर इज अ सक्सेस, ऐसा सब चीज। नहीं तो मर्डर करने के बाद पुलिस के कन्फेशन में जाके मैं मर्डर करके आया हूँ, ये शुगर ये है, एंड लिखो उसमें थैंक्स टू डॉक्टर युवराज भोसले फॉर टेलिंग मी वेयर एग्जैक्टली टू टेक द कट। ओके, तो ये 2 मसल्स है स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। उनके एक्शन जब लिखोगे तो व्हेन वन मसल एक्ट्स व्हाट हैपेंस, व्हेन बोथ द मसल एक्ट्स व्हाट हैपेंस। वीडियो चल बंद ही नहीं किया था मैंने मैंने स्टोरी को थोड़ा ऑल्टर कर दिया था उसके लिए। So when one muscle acts, sternocleidomastoid, suppose right side muscle contracts, it turns the face towards opposite side. When one muscle contracts, it turns the face towards opposite. देखो यहाँ से मसल ऐसे जा रहा है, turns the face towards opposite side. तो ये साइड का अगर मसल मुझे देखना है तो मैं इधर लिविंग एनाटॉमी में सब्जेक्ट के इधर हाथ रखूंगा, प्रेशर दूंगा और उसको बोलूंगा उधर देखो, तो दिस साइड मसल बिकम्स प्रोमिनेंट। ओके, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द ईयर टुवर्ड्स द शोल्डर, ये भी उसका एक एक्शन। व्हेन बोथ मसल्स एक्ट, so when single muscle act turns the face towards opposite side, brings the ear down towards the shoulder. When both muscles act together, it brings the face forwards as in eating, खाना खाते समय, बेड से उठते समय। Now understand one thing, sternocleidomastoid is attached to the thoracic rib cage, sternum. Abdominal muscles are attached to the rib cage below. So if the sternocleidomastoid has to act while you are sleeping and lifting your neck, the lower end of the rib cage has to be stabilized by abdominal muscles. Simple way of making your abdomen flat, like Shilpa, आपको मालूम नहीं रहेगी शिल्पा शेट्टी, सॉरी, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी की हीरोइन कौन थी वो? दिशा पटनी, मलाइका अरोरा खान,
फ्लैट एब्डोमेन, आपको अगर लगता है कि मेरा भी उनके जैसा ऐसा फ्लैट एब्डोमेन हो, lie down flat on the bed, just lift your neck, just lift your neck. That time आपको मेरे पे विश्वास नहीं, यहाँ पे हाथ रखो, पहले हाथ रखो, एब्डोमेन विल बी सॉफ्ट. जैसे ही आप आपका नेक लाइंग डाउन पोजीशन में लिफ्ट करोगे, दिस बिकम्स टाइट, बिकॉज दे एक्ट एज फिक्सेटर्स, बिकॉज दे हैव टू फिक्स द thoracic cage, because sternocleidomastoid has to lift the neck. That is the simplest way of tensing. Another way is lifting the legs one by one. दोनों एक साथ मत उठाओ initially, at least one by one. Take deep breath, lift your one leg, but don't do that. खड़े रहे मेरे पैर पे, crunches बोलते हैं ना उसको. That is bad for the spine. Okay. Sternocleidomastoid actions are done. Sternocleidomastoid इतना सब आप करोगे, उसका नर्व सप्लाई, स्पाइनल एक्सेसरी, ओरिजिन, इंसर्शन. क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड. उसमें से आधे स्ट्रक्चर्स तो आज आपने पढ़े, स्पाइनल एक्सेसरी है. देन देयर इज कैरोटिड्स आल्सो. ओके.